नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां शतरुद्रसहितायाम् अथ पञ्चत्रिंशोऽध्याय। नन्दीश्वर उवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मना अवतारं शृणु विभो साधुवेश द्विजाहव्ययं मीना हिमालयोर्भक्तिं शिवे ज्ञात्वा महोत्तमां चिन्तमापुसुरा सर्वे मन्त्रयामासुरादरात् एकान्तभक्तया शैल क्षेत्कन्या दास्यति शम्भवे ध्रुवं निर्वाणता सद्यः सम्प्राप्स्यति शिवस्य वै अनन्तरत्नाधारोऽसौ चेत्प्रायस्ति मोक्षतां रत्नगर्भाभिधा भूमिर्मिथ्यैव भविता ध्रुवं स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय स कन्यां शूलभृते दत्त्वा शिवलोकं गमिष्यति। महादेवस्य सारूप्यं प्राप्य शम्भोरनुग्रहात् तत्र भुक्त्वा महाभोगांस्ततो मोक्षं वाप्स्यति इत्यालोच्य सुराः सर्वे जग्मुर्गुरुगृहं मुने चक्रुः निर्वेदं गत्वा गुरवे सर्वार्थसाधकादिवौचु गुरो हिमालय गृहं गच्छा समत्कार्यसिद्धये कृत्वा निन्दामहेशस्य गिरिभक्तं निवारये स्वश्रद्धया सुतां दत्त्वा शिवाय स गिरिर्गुरु लभेत मुक्तिमत्रैव धर्मया स हि तिष्ठतु इति देववचा श्रुत्वा प्रोवाच च विचार्यतान् गुरुर्वाच कक्षिन्मध्य च युष्माकं गच्छे शैलान्तिकं सुरा सम्पादयेत् स्वाभिमतमहं तत् कर्तुमक्षम् अथवा गच्छत् सुरा ब्रह्मालोकं सभासभा तस्मै वृतं कथ्य स्वं स्वकार्यं करिष्यति। नन्दीश्वर उवाच। तच्छ्रुत्वा ते समालोक्य जग्मुर्विद्धि सभां सुरा सर्वं निवेदयामासुस्तः धृतं पुरतो विधे अवोच तान् विधि श्रुत्वा तद्वच सुविचिन्तये नाहं करिष्ये तन्निदां दुःखदां गहरां सदा सुरा गच्छत् कैलासं सन्तोषत् शङ्करं प्रस्थापयत् देवं हिमालयगृहं प्रति स गच्छेदत् शैलेश मातं निंदा करोतु वै परनिंदा विनाशाय स्वनिंदा यशसे मता। नदीश्वर उवाच। ततस्ते प्रययु शीघ्रं कैलासं निखिलासुरा सुप्रणम्य शिवं भक्त्या तद्वृत्तं निखिला जगु तच्छ्रुत्वा देववचनं स्वीचकार महेश्वरा देवांसुयापयामास तानाश्वास्य विहस्य स ततः स भगवान् शम्भुर्महेशो भक्तवत्सला गन्तुमेच्छैल्मूल्यं मायेशो न विकारवान् दण्डी छत्री दिव्यवासा बिभ्रतिलकमुज्ज्वलं करे स्फटिकमालां च शालग्रामं गले ददत् जपनाम हरेर्भक्त्या साधुवेषधरो द्विज हिमाचलं जगामाशु बन्धुवर्गसमन्वितं त्वं च दृष्ट्वा समुत्थस्थो सघ्नोऽपि हिमालयान्नाम दण्डवत् धूमो साष्टाङ्गविधिपूर्वकं तथा प्रपच्छ शैले शस्तं द्विजं को भवानिति उवाच शीघ्रं विप्रेन्द्र स योगायान्त्रिमहादरात् साधुद्विज उवाच साधुद्विजाहव शैलाहं वैष्णवपरमार्थदृक् परोपकारी सर्वज्ञ सर्वगामी गुरोर्बलात् मया ज्ञातं स्वविज्ञानात् स्वस्थाने शैलसतं तच्छृणु प्रथितो वच्मि हित्वा दम्भत्वान्तिकं शङ्कराय सुतं दातुं त्वमिच्छसि निजोद्वमां इमापद्या समारम्यां ज्ञातकुलशीलिने इयं मध्यस्थे शैलेन्द्र न युक्ता मङ्गलप्रदा निबोधज्ञानिनां श्रेष्ठ नारायणकुलोद्भवा पश्य शैलाधिपत्वं च न तस्यैकोऽस्ति बान्धवासन्
बान्धवान् स्वान् प्रयत्नेन पृच्छ्मेना च स्वप्रियां सर्वान् सम्पृच्छ यत्नेन मेनादीन पार्वतीं विना रोगिणेनौषधं शैलकुपथ्यं रोचते सदा न तेनुरूप पात्राञ्च पार्वतीदानकर्मणि महाजनस्मेरमुखा श्रुतिमात्रादिविश्यति निराक्ष्य सदा सङ्गो विरूपो निर्गुण्य व्यया शमशानवासी विकटो व्यालग्राही दिगम्बरा विभूतिभूषणो व्यालवरावेष्टित मस्तका सर्वाश्रम परिभ्रष्ट सत्त्वविज्ञातगति सदा ब्रह्मवाच इत्याद्युक्त्वा वचस्तथ्यं शिवनिन्दापरं स हि जगाम स्वालयं शीघ्रं नानालीलाकर शिवा तच्छ्रुत्वा विप्रवचनं भूतांस्तनूतयो विपरीतानर्थपरे किं करिष्यावहे ध्रुवं ततो रुद्रो महोतिं च कृत्वा भक्तमुदावहां विवाहयित्वा गिरिजां देवकार्यं चकार स इति प्रोक्तस्तु ते तात साधुवेषो द्विजाहय शिवावतारो हि मया देवकार्यकरो प्रभु इदमाख्यानमनघं स्वर्गयमाशुष्यमुत्तमं य पठेत् शृणुयाद्वापि स सुखी गतिमाप्नुयात् इति षट्शीत्यवतारा इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां शतरुद्रसहितां साधुद्विजशिवावतारवर्णनं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मना अवतारं शृणु विभो रक्षत्यामह्यं परं बृहस्पतेर्महाबुद्धे देवर्षैर्वशतो मुने भरद्वाजत्समुत्पन्नो द्रोणो यो निज आत्मवान् धनुर्भृतां वराशूरो विप्रर्षि सर्वशास्त्रवित् बृहति कीर्ति महातेजाय सर्वास्त्रविदुत्तम धनुर्वेदे च वेदे च निष्णातं य विदुर्बुधा वरिष्ठं चित्रकर्माणं द्रोणस्वकुलवर्धनं कौरवाणां स आचार्य आसीत् सत्त्वबलतो द्विज महारथिषु विख्यात षट्सु कौरवमध्ययत साहाय्यार्थ कौरवाणां स तेपे विपुलं तपा शिवमुद्दिश्य पुत्राथ द्रोणाचार्यो द्विजोत्तम ततः प्रसन्नो भगवान् शङ्करो भक्तवत्सला आविर्भूव पुरतो द्रोणस्य मुनिसतं त्वं दृष्ट्वा स द्विजो द्रोण सतुष्टावाशु प्रणम्य तं महाप्रसन्नहृदयोन्नतका सुकृताञ्जलि तस्य स्तुत्या च तपसा सन्तुष्टा शङ्करा प्रभु वरं ब्रूहीति चोवाच द्रोणं तं भक्तवत्सला तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं द्रोणप्राहाथ सन्नता स्वांशञ्जतनयं देहि सर्वजेयमहाबलं तच्छ्रुत्वा द्रोणवचनं शम्भु प्रोचे तथास्तिवती अभूदन्तर्हितस्तात कौतुकी सुकृन्मुने द्रोणोपगच्छत्सत्त्वं धाम महाहृष्टो गतप्रमः स्वपत्न्यै कथयामास तद्वृत्तं सकलं मुदा अथावत्सरमासाद्य रुद्रसर्वान्तकः प्रभुः संवासेन तन्यो जज्ञे द्रोणस्य स महाबला अक्षत्थ्यामेति विख्यात स बभूव क्षितो मुने प्रवीरकञ्जपत्राक्ष शत्रुपक्षक्षयङ्कर यो भारते रणे ख्यात पितृराज्ञामवाप्य च सहायकृद् भूवाथ कौरवाणां महाबला यमाश्रित्य महावीरं कौरवासु महाबला भीष्मादयो बभूवुस्तेजेया अपि दिवोकसां यद्यात पाण्डवा सर्वे कौरवाञ्जेतुमक्षमा आसनष्टा महावीरा अपि सर्वे च कोविदा कृष्णोपदेशता शम्भोस्तपः कृत्वाति दारुणं प्राप्य चास्त्रं शम्भुवराजिज्ञतानुर्जुनस्तथा अक्षथामा महावीरो
महादेवांशजो मुने तथापि तदक्तिवशा स्वप्रतापं दर्शयत् विनाश्य पाण्डवसुतान् शिक्षितानपि यत्नता कृष्णादिभिर्महावीरैः निर्वाय बलपरे पुत्रशोकेन विक्लमा पतन्तमर्जुनं यथेनाच्युत यत्वन्तं हि दृष्ट्वा स च पराद्रवत् अस्त्रं बह्राम्मा शिरो नाम तदुप्रयुक्त सृजतस्य हि तथा प्रादुर्भूतेज प्रचण्ड सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य सोऽर्जुनकलेशसंयुता उवाच कृष्णं विक्लान्तो नष्टतेजा महाभये अर्जुनोवाच किमिदं स्वित्कुतो वेति कृष्ण कृष्ण न वेदमयं सर्वतोमुखमायाति तेजश्चेन्दसद् सुदुसं नन्दीश्वरवाच श्रुत्वार्जुनर्वचश्चेदं स कृष्णशैव सत्तमा दध्यो शिवं सदारं च प्रत्याहार्जुनमादरात् कृष्णवाच वेत्तदेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रमहोल्बनं न हास्नाययतं किञ्चिदस्त्रं प्रत्ययकर्षणं शिवं स्मरद्रुतं शम्भु स्वप्रभुं भक्तरक्षकं येन दत्तं हि ते सवास्त्रं सर्वकार्यकरं परं जहास्त्रतेज उन्नतं त्वं तच्छेवास्त्रतेजसा इत्युक्त्वा च स्वयं कृष्णं शिवं दध्यो तदर्थकः तच्छ्रुत्वा कृष्णवचनं पार्थं स्मृत्वा शिवं हृदि सपृष्ठापास्तं प्रणम्याशु चिक्षेपास्त्रं ततो मुने यद्यप्यस्त्रं ब्रह्माशिरस्तत्त्वमोघचा प्रतिक्रियं शिवास्त्रतेजसा सद्या संशमायं महामुने मत्स्थमाहोतदाक्षर्य सर्वचित्रमये शिवे यस्वशक्तदाखिलं विश्वं सृजत्यवतिहन्त्यज अक्षतामा ततो ज्ञात्वा वृत्तमेतच्छिवांशज शैवं न विव्यथे किञ्चित् शिवेच्छातष्टधीर्मने अथ द्रोणिहृदं वीक्षं कृत्स्नं कर्तुं पाण्डवं उत्तरागभर्गं बालं नाशितुं मनादधे ब्रह्मास्त्रमनिर्निवार्य तन्दरैर्समैर्महाप्रभम् उत्तरागर्भमुद्दिश्य चिक्षेप स महाप्रभु ततक्षसोत्तराजिष्णु वधूर्विक्लमानसा कृष्णं तुष्टावलक्ष्मीशं द्रुह्माना तदस्तरत् तथा कृष्णं शिवं ध्यात्वा हृदा नुत्वा प्रणम्य च पाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणरस्त्रं बुध्यत स्वरक्षार्थेन्द्र दत्तेन तत्स्त्रेण सुवर्चसा सुदर्शनेन तस्याक्ष व्यध्यात्रक्षां शिवाज्ञया स्वरूपं शङ्करोदेशात् कृतं शैववरेणः कृष्णेन चरितं ज्ञात्वा विन्मनस्सकं शनैरभूत् तथा स कृष्णां प्रीतात्मा पाण्डवान् सङ्कलानपि अपातयत् दन्घ्रोस्तु तुष्टे तस्य शैवराट् अथ द्रोणी प्रसन्नात्मा पाण्डवान् कृष्णमेव च नानावरान् ददौ प्रीत्या सोक्षतामनुग्रह च इत्थं महेश्वरस्ताच्चक्रे लीलां परां प्रभु अवतीर्य श्रितो द्रोणीरूपेण मुनिसतं शिवावतारोक्षत्थामा महाबल पराक्रम त्रैलोक्यसुखदोऽद्यापि वर्तते जाह्नवीतटे अक्षत्थामवस्तारस्ते वर्णितः शङ्कर प्रभु सर्वसिद्धिकरक्षापि भक्ताभीष्टफलप्रद य इदं शृणुदत्तया कीर्तयेदा समाहिता स सिद्धिं प्राप्नुयादिष्टामन्ते शिवपुरं व्रजेत् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुत्सहितायां श्वत्थां शिवावतारवर्णनं नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः।